Hello everyone, myself Namneet. Welcome back to my YouTube channel. Firstly, subscribe my channel if you want to boost your score in each and every module of IELTS. Today I will tell you some of the important tips regarding the cue card. Like it is challengeable for the candidate how the 2 minutes can be completed by them in order to make their cue card, and how their cue card also can become more imperative. I will give you some of the suggestions and some of the structures that may use you can use in each and every cue card in the starting of portion. सो रजी अज आप डिस्कस करांगे कि आप क्यू कार्ड नूं किवें इंपैरेटिव बना सकते हैं। सब तो पहला तो मैं एक जनरल लाइन के पोर्शन दे विच मैं तुहानूं कुछ वोकैबलरी वर्ड्स करवाऊँगी। दीज आर वेरी कॉमन, यू कैन यूज इन योर each and every cue card while making it. As everyone know that we can always take a one time in the speaking test in order to elaborate our vocabulary words and some of the other words. Sometime the examiner will ask you some of the questions and give you some of the cue cards also. ठीक है, तो वो ਜਿਹੜੇ क्यू कार्ड के क्वेश्चनस होंगे हैं बहुत ईजी होंगे हैं, दैन यू आर नॉट एबल टू यूज योर वोकैबलरी वर्ड्स इन द इनोवेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। सो समटाइम ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਟੀਚ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਵੋਕੈਬਲਰੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਬੂਸਟ ਯੂਰ ਸਕੋਰਸ। Because I also have experimented on my candidates who have gotten very nice band score on the behalf of these type of vocabularies which has been used by them on the day of exam while the cue card. So firstly ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ word use ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ undeniably। undeniably ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ cue card ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੋਏ ਦਾ cue card ਹੈ, टॉय का क्यू कार्ड बहुत ज़्यादा चल रहा है अजकल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ यूज़ करांगे। सब तो पहला अंडरनाइबली वर्ड आ गया जिहदा मतलब की हुंदा है कि देयर इज़ नो डाउट। उस तो बाद आ गया राजे होल्ड एन इंडिस्पेंसिबल रोल। यू कैन यूज़ दीज टू वर्ड्स इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ टास्क 2। अंडरनैबली का मतलब की हो गया, ये कोई शक नहीं। होल्ड एन इंडिस्पेंसिबल रोल का मतलब की हो गया, इंपॉर्टेंट रोल। उस तो बाद नरिश की हो गया, किसी चीज़ नूं निखारना। चलो लैट्स स्टार्ट विद इट कि आप किमें इंपॉर्टेंट जिहड़े पार्ट हैं उन्होंने किमें इलैबोरेट कर सकते हैं। इंटलैक्चुअल की हुंदा अपने कोले माइंड पावर नूं कहंदे हैं। सेंस ऑफ सेविंग मनी एक ही हुंदा अपने कोले, जिवें आपां टॉय दे विच डिस्कस करांगे। उस तो बाद आ गया ओल्डो ते बट वाला कंसैप्ट। एक चाइल्डहुड के नाल तुसी इन चाइल्डहुड कदे नहीं यूज़ करना, यू शुड गो विद द सिंस चाइल्डहुड बिकॉज इन दिस वे यू कैन बूस्ट योर स्कोर इन द ग्रामेटिकल सेंस एंड इन द कोहेरेंस पोर्शन ऑल्सो। एंड यू शुड गो ऑल्सो विद द एडवर्ब पोर्शन दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू मेक योर क्यू कार्ड मोर इंपैरेटिव। सो लेट्स स्टार्ट। सब तो पहला आप डिस्कस करांगे डिस्क्राइब अ टॉय यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड। तो एक टॉय बारे दसो जिहड़ा तुसी अपने चाइल्डहुड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਜੇ ਐਜ਼ ਯੂਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅੰਡਰਨੈਬਲੀ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਡਰਨੈਬਲੀ ਟॉयज hold an indispensable role in the life of the children in order to nourish the intellectual power of the children, because the toys are considered as a good friend while ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟॉयज हैं वो बहुत ज़्यादा की मन्ने जाते अपने को एक फ्रेंड्स बने जाते हैं। उस तो बाद अपने डिस्कस करना है वट काइंड ऑफ टॉयज इट इज़। तो स्टार्टिंग के जो तुसी शुरू वाली लाइन स्टार्ट करनी है तुसी किहड़ा कंसैप्ट लगाना है, तुसी लगाना है ओल्डो ते वट वाला कंसैप्ट। तो तुसी किवें यूज़ करोगे इस चीज़ को। Although I have played with many type of toys since my childhood, but here I would like to talk about one of the toy which has a great impression on my mind. It was given by my grandmother when I was in my primary. Actually, this is a toy of a money bank. And I used to play with that toy in the form of counting the coins, and it left the soothing effect on my mind and rejuvenate my tired mind from the monotonous of daily routine. So ये वाला point भी हो गया कि तुसी उहदे नाल किवें खेलदे सी। when you received ये भी हो गया, what kind money bank हो गया, ये भी हो गया। हुण उस तो बाद इनू properly explain करदे हां भी वो किवें दिखदा सीगा। Actually it the money bank looked like one of the hut and its color was pink. It was very
very beautiful. And when on the door there was one button, when we pressed in the button, then definitely one dog come and collect the coin and entered back and returned back in the house, in the hut. And it was one such a fabulous and beautiful toy which was used by me in order to play since my childhood. I felt very happy about that toy. Firstly, I have learnt about the sense of saving money because of that toy, because I really had completed numerous type of desires just because of the saving money which I have saved with the help of that money bank. So इस तरीके दे नाल आपां ने आ वाले क्यूज पूरे करते. लास्ट वन रह गया, हाउ यू फेल्ट. आई फेल्ट वेरी हैप्पी अबाउट दैट टॉय. नाउ आई हैव परचेज्ड इट very carefully because I really want to give it to my next generation so that they can learn about how to save the money and what is the value of money, and the sense of saving money can be learned by them. Not only this, but also it is a great memory of my grandmother, because nowadays my grandmother is no more. So whenever I look at towards that money bank and that toy, I really remembered, and my precious day of my past really remembered just because of that toy. So I felt very happy about that toy, and I always like to recommend to everyone that we should always give these type of toys to everyone, so that to the children, so that the children can improve their traits and characteristics that may be helpful for them, not only personally but also professionally as well as academically. So इस तरीके दे नाल जेड़ा तुसी क्यू कार्ड है वो तुसी इलैबोरेट करना है. सो राजे कई बच्चे की करते हैं, रट्टा मार लेंदे हैं, तो जदों एग्जामिनर तुहानूं एक क्यू कार्ड दा क्वेश्चन दिंदा तां वो क्यूज ते नहीं जांदे. क्यूज़ दे विच इदां नहीं हैगा कि जेड़े क्यूज़ जस्ट आपां नूं जस्ट आपां टीच करते हैं, जां जस्ट आपां पढ़ते हैं इंटरनेट ते पढ़ते हैं, जां फिर कुछ टेलीकास्टस ते पढ़ते हैं. ठीक है, ये जरूरी नहीं हैगा कि तुहानूं उस बेसिस ते ही क्यू कार्ड आऊगा, क्योंकि क्यू कार्ड दे विच एग्जाम्स दे विच की हुंदा है, जेड़ा क्यू कार्ड हुंदा है अपने उहदे क्वेश्चनस हुंदे आ वो कई बार चेंज हो जाते हैं. जिमें ये सीगा वैन यू रिसीवड, इत्थे आ सकता है हू गेव यू दैट गिफ्ट, इत्थे आ वाला पॉइंट आ सकता है. जे तुसी वो उत्थे मेजर आउट ना किया, तो फिर जे तुसी जस्टिफाई ना करवाया एग्जामिनर दे इन फ्रंट ते, दैन डेफिनेटली यू कैन लूज योर स्कोर. सम ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो हैव अ क्वेश्चन कैन दैट आई इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ गुड स्पीकिंग एंड आई ऑल्सो हैव एलैबोरेट वेरी वेल टू द क्यू कार्ड इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर, दैन वाई आई गॉट वेरी लेस मार्क्स. सो ये बिहाइंड जिहड़ा आंसर है वो ये है कि बच्चों के जिहड़े क्यूज़ हैं वो कंप्लीटली कन्फर्म नहीं होंगे, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, दैन आफ्टर दैट दे इलैबोरेट इट एंड इन दिस वे दे डिडक्ट ऑलवेज देयर मार्क्स. इस तरीके दे नाल उन्हां दे कदे भी मार्क्स नहीं आउंदे राजे. सो ये सीगा अपने कोले क्यू कार्ड का पोर्शन जिन्होंने आपां स्टार्ट करना है. ये तो एक क्यू कार्ड हो गया. आपां डिफरेंट टाइप ऑफ जिहड़े क्यू कार्ड्स हैं उन्होंने डिस्कस करते हैं. तुसीं इंट्रोडक्टरी पार्ट किवें बनाउणा है तो स्टार्टिंग पॉइंट किवें बनाउणा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जिन्ने भी कमेंट्स वगैरह भी आए सीगे, जां फिर क्लासिस दे विच भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मैनूं क्वेश्चनस कीते सीगे. कहंदे ऑनलाइन क्लासिस दे विच भी बहुत सारे बच्चों का ये डाउट सीगा कि मैम कि जदों असीं क्यू कार्ड स्टार्ट करते हैं उस टाइम तो पोर्शन नहीं मिलता, बट वी हैव अ गुड स्टोरीज, बट we don't know how we will make our introduction and how we will start our cue card, how we should go with the in the starting of the cue card. So ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇੱਕ क्यू कार्ड हो जाऊगा ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ क्यू कार्ड ਹੈ ਉਹ ਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. Describe something that was broken in your home and then repaired. एक थिंग है जिहड़ी कुछ उस बारे दसो जिहड़ी तुहाडे मतलब घरे टुट्टी ते तुसीं उहनूं रिपेयर कीता. तुसीं उही वर्ड करोगे कि undeniably, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं, in our daily routine our numerous type of things are broken daily, and some of the things we can repair ourselves and some of the things require and need to go to the special store for the special trainer so that these type of terms can be repaired.
उस तो बाद तुसी ऑल्दो ते बट वाला कंसैप्ट सारिਆਂ 'ਚ ही लाना है। ऑल्दो आई a lot of things were repaired by me, but here I would like to talk about one of the term which has been broken, ਜਿਹੜੀ कि broken हो चुकी ਸੀਗੀ, ठीक है, and repaired recently ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੋਨ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸਪੀਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਔਨ ਦ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਿਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਗੋ ਵਿਦ ਅ ਗੁੱਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵਰਡ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਮੇਕ ਯੂਰ ਜਰਨਲ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਯੂਰ ਟॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपने को, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू ऑर्गेनाइज्ड अ हैप्पी इवेंट सक्सेसफुली। अनडेनिably planning holds an indispensable role in order to make the organization, in order to make the celebration towards the organization more imperative, in the undeniably one of the organization, one of the event, one of the occasion can be made, बनाया जा सकता है, can be made full of can be made by using some of, can be made very fruitfully with the help of innovative and constructive ideas in the form of organization. Although a numerous type of events have been organized by me, but here I would like to talk about one of the event which was organized by me and it was totally happy moment and successfully also। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਡ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸਮਥਿੰਗ ਯੂ ਰਿਸੀਵਡ ਫॉर फ्री। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ undeniably free service bring the happiness towards others, ਜਾਂ undeniably free service holds an indispensable role in the life of the people because it holds the indispensable role in the life of the people। Although numerous type of services have been taken by me, but here I would like to talk about one of the service which was taken by me without paying anything। it was unpaid भी कह सकते हो तुसी, without paying anything because it was totally free of cost। it occurred ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, you can ask। next क्यू कार्ड है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, describe a famous person that you are interested in। Undeniably high popularity has been gained by a numerous type of people who have gotten a name and fame। although I know many people who has a great popularity, who are famous, who are renowned personalities also, but here I would like to talk about one of the person whom I always like to take an interest। he is this, ਜਿਹੜਾ ਵੀ person ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੀਸੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਟॉय वाला पोर्शन ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅ ਪਰਸਨ you only met once and want to know more about। undeniably in the daily routine we usually meet numerous type of people here, although I like many people and whom I love to meet, but here I would like to talk about one of the person whom I met once a time, but in the coming days if I get a chance I would like to meet again। he is this, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ person ਹੈ you can explain it। next ਹੈ describe a resolution you made in the new year। ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ, ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। undeniably a numerous type of amendments are entered in our life, although I also have changed a numerous type of habits, but here I would like to talk about one of the resolution which I have adopted in my life on the 1st of January। so ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ you can make your introduction more imperative, and this in the starting of the criteria you can make more imperative। firstly it is a word of vocabulary undeniable। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ly ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ it become adverb। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਵਰਬ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਬੂਸਟ ਯੂਅਰ ਸਕੋਰਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਇਟ। ਸੋ ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਫ ਐਨੀਵਨ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕਾइंड ऑफ डाउट
then as usual you can upload, and you can make any kind you can give some of the comment on my video, so that I can clear your queries on the behalf of your doubts and on the behalf of your queries. In this way, firstly subscribe my channel please if you want to make your scores more imperative, if you want to make your writing, speaking and any type of module more imperative, and you want to boost your score, and you have a target in order to complete your towards the 777 overall 8, then definitely follow my videos. All videos are imperative, and definitely I always love to make the video on the behalf of experimented on my candidates who have given the IELTS exams, and who have gotten a great band score in the IELTS exam. Thank you so much.